Hello everybody, welcome to my channel Learn with Harpreet. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel to watch all educational videos. Today the educational video is for class 6 science. It is the continuation of the previous video that was I had taken the chapter about science in our daily life. So this is the continuation of that. This is the science in daily life part 2. I was explaining you in the previous video about science in daily life, and I told you about a girl Seema who had lot of curiosity and she used to ask questions to her teacher. So this is the continuation of the previous video. If you have not watched my previous video related to this part 1, so please kindly watch that, then only you will be able to understand what is here. The teacher explained Seema about the changes that takes place in daily life ड्यू टू साइंस. फिर टीचर ने एक्सप्लेन किया सीमा को कि साइंस में जो चेंजेस होते हैं दैट टेक प्लेस इन डेली लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ में चेंजेस होते हैं वो साइंस, वो विज्ञान से कैसे रिलेटेड है उसको सब समझाया. जैसे कि ये समझाया ट्रैक्टर है, अदर एग्रीकल्चरल मशीन्स हैं जैसे कि थ्रेशर है, सीड ड्रिल है, हार्वेस्टर है. दीज ऑल आर द गिफ्ट्स ऑफ साइंस टू एक्सपेडाइट एग्रीकल्चरल वर्क. ओके, ये एग्रीकल्चरल वर्क को इम्प्रूव करने के लिए अब सीड ड्रिल मशीन्स आ गई हैं, थ्रेशर्स आ गए हैं, ट्रैक्टर्स चलते हैं, यस और नो. और रेडियो एंड टेलीविजन आर they provide information all over the world. These are the means of communication जो बने हैं. This is a gift of science to us. तो ये जो हैं ये information देते हैं all over the world and they are a source of entertainment to us. Yes or no? Radio and television are there. Food is cooked fast on gas stove. Gas stoves बन गए हैं and food is cooked very fast on gas stove. This saves the time and labor. उससे time भी बचता है, labor भी बचता है, मेहनत बचती है, and it also reduces the pollution. और pollution भी नहीं होता है जो कि चूल्हा जलाने से होता है. Trains, cars, buses, aeroplanes are the various means of transport by which we can travel long distances in a very short time. Yes, अगर हमें बहुत दूर जाना है तो जो ये by air transport, by train, we can travel easily, and these all are the gifts of science to us. Okay, as a result of the discoveries of science only, it has become possible to develop agricultural machines, means of transport and communication, and many other means and materials. See, it is the gift of science to us that we have got many means of transport and communication. Transport and communication, it is the gift of science to us. Transport and communication. And the second thing is we have got many agricultural machines. This is again a contribution of science. Agricultural machines, yes. Gas stoves in our daily life. Yes, for our daily life also there are many things. Now science has helped to solve many of our problems related to food, health and traffic. Pumps and canals provide sufficient water for irrigation. Now what happens is when we need water for irrigation, then pumps are created and canals are there. Yes, pumps and canals are created for irrigation of the water, and today high yielding seeds, fertilizers, pesticides are available very easily. High yielding, you know what high yielding means? Which give high products, high efficient products, high yielding fertilizers, pesticides, high yielding seeds. Okay, and fertilizers and pesticides are available which kill the unwanted pesticides in the fields. Yes, so this all is a gift of science. Science has done a lot of contribution given us the contribution in the field of entertainment. In the field of entertainment means TV, yes, TV, internet, lot of work done in the field of entertainment where you can say TV, internet, many sources, radio, yes, radio. So in the field of entertainment, science has done many things. Communication, in the fields of medical, lot of new medicines and vaccines are being developed day by day. And education, in the field of education also science has done a lot for us. So through newspapers and radio we get information about the events happening in the country. When we read the newspapers we get about knowledge about the events which are happening in our country, कि हमारी country में क्या हो रहा है, and we can हम पढ़ सकते हैं newspapers में और हम उसको रेडियो में सुन सकते हैं, टेलीविजन में देख सकते हैं. तो ये रेडियो, टेलीविजन, these all are the gifts of science to us. Yes, all of these developments are just possible because of science.
human beings have always been trying to acquire more knowledge and to apply that in the right way. हमेशा वैज्ञानिकों की, साइंटिस्ट की यही रहती है, मतलब they always try to make new and new things which are beneficial to the human society, जो हम लोगों के लिए बहुत सहायक हों, ऐसे काम करते हैं. You will always be also be curious to know about many new discoveries. और साइंस में हमेशा साइंटिस्ट जो हैं they keep on doing more and more new discoveries. Okay, now after this I'll start the topic is the problems caused due to misuse of science. See, as जैसे कि साइंस है, प्रॉब्लम उसका अगर अच्छा यूज करेंगे, बेस्ट यूज करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स देगा. बट इफ we don't use it properly, that is not going to give us best results. That is if it is misused, the misuse of the scientific things of science will always lead to the problems, will always lead to some problems. So what are the problems are? So here is a list of problems that is caused due to misuse or overuse of scientific things, overuse of the scientific, you can say scientific aids which are made for human beings' help. They are if misused. Now see, the first is the very big problem is what? Is a pollution. See, if there are lot of petrol diesel vehicles which are running on the roads, yes, they are causing a lot of air pollution. Petrol and diesel driven vehicles are making our air polluted, and the use of chemical fertilizers and pesticides, it has though increased the agricultural products, though agricultural production agricultural production is increased with the use of fertilizers and pesticides, though they have increased our agricultural production, but do you know what harm they have created? But due to its inappropriate use, the soil pollution and water pollution is emerged. You know, this has led to soil pollution, this has led to air pollution. Okay, this has even led to water pollution, because when water is put for irrigation in the fields, and fertilizers and pesticides, they flow down with the soil, so even the water gets polluted. Then the third thing is the river are getting polluted, and the number of farmer friendly creatures like earthworms, snakes, they are declining. These are the farmer friendly creatures, they are declining, means kam hote ja rahe hain. Rivers are getting polluted. See, rivers are getting polluted. Okay, rivers bhi pollute hote ja rahe hain because of the excessive use of these things. Groundwater level is going down due to the uncontrolled exploitation of groundwater, by which the wells and ponds are drying up. अब क्या होता है, सबके घर में जेट पंप वाला पानी लगता है, तो सब लोग जब बोरिंग करते हैं, नीचे का अंडरग्राउंड वाटर है, इट इज डिक्लाइनिंग, वो कम होता जा रहा है. और ये सब क्या है, वेल्स और पॉन्ड्स सब ड्राई अप हो रहे हैं, सब सूखते चले जा रहे हैं. ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, इट इज डिक्लाइनिंग. सो फोर्थ पॉइंट यू कैन से कि जो ग्राउंड वाटर है हमारा, वो कम होता जा रहा है, और ग्राउंड वाटर इज डिक्लाइनिंग, कम होता जा रहा है. ठीक है. आफ्टर दैट नंबर 5 इज, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, आई टोल्ड यू, इसमें ग्राउंड वाटर का बहुत अगर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, बार बार नीचे से पानी को बोरिंग करके अपने घर पे लाएंगे, तो नीचे का पानी जो है वो खत्म होता चला जाएगा. येस और नो. नेक्स्ट थिंग इज साउंड पोल्यूशन इज जनरेटेड बाय लाउड म्यूजिक, लाउड स्पीकर्स. आपने देखा है कि साइंस ने लाउड स्पीकर्स भी बनाए हैं. इट इज ऑल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स. तो वो जो लाउड स्पीकर्स बनाए हैं, वो क्या कर रहे हैं, साउंड पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, और उनकी जो हार्श नॉइज और बहुत बड़ी ज़्यादा नॉइज होती है, दैट कॉजेस इम्पैक्ट ऑन ब्रेन ऑल्सो. उससे क्या हो रहा है, ह्यूमन ब्रेन को भी इफेक्ट हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से इज ह्यूमन लाइफ इज सफरिंग इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन ह्यूमन इनहैबिटेशंस. हम लोग जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे जो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट अगर नहीं होता है प्रॉपरली, तो बीमारियां भी बहुत लग जाती हैं. तो ह्यूमन लाइफ इज सफरिंग बिकॉज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट अगर नहीं होता है. जहाँ हम रहते हैं उस जगह पे वेस्ट को डिस्पोज अच्छे से नहीं किया जाएगा, तो बहुत बीमारियां लगेंगी, और क्या होगा, और प्रॉपर डिस्पोजल ना होने से ह्यूमन लाइफ को बहुत सफर करना पड़ेगा.
उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू रेडियो एक्टिव रेडिएशन द फियर ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ हैज इमर्ज्ड। क्योंकि अब जो ओजोन लेयर है, जो हमारे स्काई में ओजोन लेयर है, उसमें एक होल होने लग गया है। यू मस्ट हैव हर्ड ओजोन लेयर इन द स्काई विच प्रोटेक्ट्स अस, ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को नीचे आने से, बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। सो हमें ओजोन लेयर जो है यही बचाती है इन रेडिएशन से। बट इसका अब क्या हो रहा है, इसमें एक होल हो गया है, ये धीरे धीरे ये होल बढ़ता चला जाएगा और ओजोन लेयर पतली होती चली जाएगी। सो दिस विल बी फियर फॉर द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ। सो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, आप कह सकते हैं कि ओजोन लेयर कम होती चली जा रही है। ठीक है, these all are because of the excessive use of misuse of scientific things. ओके, और AC है, एयर कंडीशनर्स है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, इनमें जो गैस डाली जाती है, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये जो होते हैं, दिस इज एडेड इन, ये गैस ऐड की जाती है एसीज में एंड रेफ्रिजरेटर्स में ऐड की जाती है। और ये जो गैस है, इससे निकलने वाला जो रेफ्रिजरेटर्स, ये इससे जो गैस निकलती है, व्हेन इट गोज टू द एटमॉस्फेयर it depletes the ozone layer. This is responsible for the depletion of ozone layer. यही रिस्पॉन्सिबल है जो ओजोन लेयर को खत्म कर देगी एक दिन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर ड्यू टू स्मोक ऑफ व्हीकल cause headache, asthma and last one you can say is medical problems. ठीक है, अगर बहुत pollution increase हो जाएगा तो medical problems भी arise हो जाएंगी. So till here I finish with the problems which are caused due to the misuse of science and scientific aids that were made for helping the human beings, but their excessive use and their misuse is creating problem for us, a lot of problem for us. And now after this, in my next video, we'll continue with this chapter and we will see what more science has to give us. Thank you.